झारखंड का फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल, उसे सरुल कहते हैं। सरुल जो है वो आदिवासी लोग, जो आदिवासी समाज है झारखंड की, वो मनाते हैं। और ये आदिवासी समाज जो है झारखंड की, ये प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो इनका नया साल तब शुरू होता है जब साल के पेड़ पे पहले पत्ते आते हैं। हाँ, और फिर वो इस तरह से ये मनाते हैं कि उस दिन, जिस दिन नया साल होता है, उस दिन ये व्रत रखते हैं। सुबह सुबह उठ के साल के पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पूजा होती है। बहुत सारी सामग्री जैसे लकड़ी, चावल, पत्ते और भी खाने का सामान। एक स्पेशल चीज़ होती है हड़िया करके, वो चावल का फर्मेंटेड पानी होता है, वो ये साथ लेके जाते हैं। और फिर साल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, और इस तरह से ये अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आप हमारी जो पोशाक देख रहे हैं, हाफ साड़ी, ये झारखंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और इसे पहन के जब एक बार पूजा हो जाती है, उसके बाद फिर खाना बनता है, लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर डांस होता है। तो हम आपको बाद में हम अपना डांस दिखाएंगे। And Jharkhand is a region bordering Bengal, so there's a lot of overlap between the food traditions, the colors and cultures. So you can see we are wearing white and red combination. And anyone who has a little bit knowledge about astrology, it represents the planets Mars and Venus. So basically it's beauty and energy fused together. So you enter the new years with a lot of beauty, you celebrate beauty, but you enter it with vigor and energy. And that's precisely the reason that in some parts of India the brides wear white, for example in Gujarat, and in some parts they wear red. So this is the combination you're representing. And a little bit about the food we have taken with us. It's basically rice dumplings and it's called dhuska. And it's made with a combination of rice and lentils. So it's basically the Jharkhandi soulmate of dosa idli from South India. And it's served with potato curry. And it's a very popular breakfast item, very rich. So it's served in festivals or during weddings or special occasions. And now maybe a little bit dance. Yes. Yes, a little bit dance. We are from North India, पंजाब। आपने खाने से देख लिया होगा कि पंजाब को खाना कितना पसंद है। हमारे यहाँ खाने के भरपूर, दुनिया में हम खाना खिलाते हैं, ये हमारी परंपरा है। ये हमें कहाँ से मिली है, इसकी बात हम आप आज करेंगे कि आज 13 अप्रैल 1699 में हमारा पंजाब का नाम हुआ था। वो क्या था? खालसा पंथ। हमारे 10th गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें एक इक्वलिटी दी। होल इंडिया से डिफरेंट स्टेट से 5 लोगों को इक्वलिटी देने के लिए 5 प्यारों को इकट्ठा किया। उनको एक आइडेंटिटी दी, वो थी सिंह। आपने कभी भी सुना होगा, जो पंजाब से आता है उसका नाम सिंह और लेडीज़ का और से स्टार्ट होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है। जो टर्बन पहनते हैं, अगर नहीं भी पहनते, लेकिन आइडेंटिटी हमारी सिख की बनी हुई है। और हमें उन्होंने ये सिखाया कि हम एक हैं, होल इंडिया एक है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम पंजाबी हैं तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम पंजाब की हेल्प करें, हमें होल वर्ल्ड की हेल्प करनी चाहिए। ये आपने कोविड के टाइम में देखा होगा, और ये हमारी एग्जाम्पल है। मैं तो इसी के लिए यही बताना चाहती हूँ। और अगर हम जो हमारा कल्चर है वो है, जो मंजू भाटिया ने पहना हुआ है, ये है सूट, पंजाबी सूट। और जो मैंने पहना हुआ है ये है घाघरा, जो हमारे कल्चर था। आज से 18वीं सेंचुरी से जो हमारी लेडीज़ थी, वो ये सूट के ऊपर से ये घाघरा पहनती थी। वो था 25 मीटर का, और ये तो फ्लेयर बहुत कम है।
वो बाहर जाने के लिए उनका एक ड्रेस होती थी घाघरा। और ये जो मैंने पहनी है दुपट्टा, ये है हमारी हैंडमेड फुलकारी। इसको हम कहीं भी कल्चर में पहनते हैं। और 13 अप्रैल को उसके बाद लोगों ने हमारे लिए ये पंजाब का स्पेशल डे इसलिए है कि उस दिन हमारे गेहूं की खेती की कटाई होती है और सभी खुश होते हैं क्योंकि उस टाइम लोगों के पास पैसा आता है। तो वो गिद्दा, भांगड़ा, खलचे, वो हम लोग इकट्ठे होके इसको इसीलिए मनाते हैं। रिलीजियस तरीके से भी मनाते हैं और कल्चर तरीके से भी मनाते हैं। थैंक यू। ये हमारा ट्रेडिशन खाना है। ये मक्की की रोटी है, सरसों का साग है, दही है और ये मीठे चावल हैं और ये चिकन है और घर का मक्खन है बनाया हुआ। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक और खाना टेस्ट करना ज़रूर। थैंक यू। हरियाणा में और पंजाब में यो साल लगभग एक जैसा ही मनाया जावे है। जुगर पंजाब में मनाया जावे ऐसे ही हरियाणा में मनाया जावे है। हरियाणा में यो साल चैत्र मास की पहली नवरात्रि ने शुरू होवे हैं और यो लगभग अप्रैल में आवे है। यो कदे 13 तारीख ने कदे 14 तारीख के आसपास आवे हैं। और इस टाइम पे गेहूँ की फसल पक कर तैयार हो जाए है और उसकी कटाई होवे है। हरियाणा में पहली फसल की कटाई से कुछ मीठा बनाया जाता है और उससे भगवान की पूजा की जाती है और ये सोचा जाता है कि इस टाइम पे भगवान हमारी झोली खुशियों से भर देगा। और हरियाणा में मतलब दामन और कुर्ता पहना जाता है। और आज हमने गुड़ और आटे से पूड़े बनाए हैं जो कि हरियाणा में मेन बनाए जाते हैं, उसी से पूजा की जाती है और साथ में कढ़ी और चावल हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, आप ट्राई करना। एंड अगेन आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। राम राम। खमा गणिसा, मारो नाम स्वाति रत्नो है। मैं आज राजस्थान ने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। खम्बा खैनी, मैं पारुल सोनी। आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग राजस्थान टुडे। आज थोड़ा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। आदर जो भाइयों और बहना, खमा गणी, मैं आज राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जो कि भारत तो सब बड़ो राज्य है। राजस्थान आज़ादी पहला 26 देशी रियासत में क्षेत्रफल में हो संपूर्ण एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 में यो राजस्थान बन्यो। आ धरती बखान जोग है। इन धरती रो बखान करनो जाने सूरज ने दियो दिखाणो है। आ धरती सूरारी, भक्तारी, कवियारी, सतियारी और शक्तियारी है। इन धरती पर पराक्रम री सदा ही पूजा हुई है। बप्पा रावण लेर महाराणा प्रताप तक एक बड़ वीर हुआ है। राजस्थान जोर री धरती है। स्त्रियां आपरे मान ने बचावन खातिर आग में कूद जाती, जिनमें पद्मावती रो जोर इतिहास प्रसिद्ध है। इस धरती पर कर्मा, मीरा, ईश्वरदास जड़ा भक्त है। राजस्थान सभ्यता और संस्कृति में उतरो ही जूनो है जितरी सिंधु घाटी सभ्यता है। वो क्षेत्र सदैव सुई बिणज व्यापार में सदा ही आगे रियो। भारत रा कोई भी शहर में आपने राजस्थानी व्यापारी मारवाड़ी नाम सु जरूर मिलेला। भारतीय अर्थव्यवस्था में आ मारवाड़ियां रो विशेष योगदान है। इन धरती पर पैराण, खान पान, बोलचाल सगड़ा ही न्यारा है। राजस्थान में चूरमा दाल बाटी, केर सांगरी रो साग विशेष रूप सामाजिक अवसरों पर बनायो जाए। और इमें जोधपुर रो मिर्ची बड़ो और जयपुर रो घेवर विश्व ख्याति प्राप्त करेड़ा है। राजस्थान री वेशभूषा में लहंगा, कुर्ती, कांचली और साड़ी, स्पेशली बंदेज री साड़ी, और पुरुषा में धोती, कमीज और साफो जग चाहिए। ई धरती री स्थापत्य कला आज भी लोगों ने आपरी ओर आकर्षित करे। भारत में आवणिया 60% सैनाली राजस्थान जरूर आवे। राजस्थान खनिज उत्पादन में भी भारत में महत्वपूर्ण स्थान राखे। ताजमहल जैसी सुंदर जकी रचना है वो जिन पत्थरों बनेड़ी है वो भी राजस्थान में मिले। इन वास्ते संगमरमर ने मकराणो भाटो कही जाए। बहनों और भाइयों, राजस्थान रो बखान करनो मैं खुद कुछ शब्दा में नहीं कर सकूं, पर समय ने ध्यान रखा और मुख्य बिंदुआ ने आपके सामने रखते हुए मैं स्वाति रत्नो विराम दूं।
Kamagani. Thank you, Swati, for glorifying Rajasthan today. Rajasthan celebrates its New Year as per the Hindu lunar calendar in the month of Chaitra. The first day of Chaitra Navratri is marked as the Rajasthani New Year. We do Ghat Sthapna on this day, and we dedicate the next 9 days to worship the goddess, 9 forms of goddess Shakti. We make traditional Rajasthani food like halwa puri, dal bati churma, and kheer as prasad to Devi Ma. The last day of Navratri, we invite young little girls, wash their feet, seek their blessings, and offer them meals and small gifts. Today, with us, we have brought a small part of Rajasthan to share with you all. Mirchi Bada, which is the authentic snack originated from Jodhpur city of Rajasthan, which is kind of snack with the whole complete mirch and stuffings. And when your taste buds and your mouth is tickled by the spicy mirchi bada, don't forget to relish the churme ka laddu, which is also authentic Rajasthani sweet. So I'll just conclude here. We conclude here, and we'll conclude with the way we Rajasthanis conclude. The best part of the description is due to your graceful presence, and the responsibility of the worst part goes to us. Thank you. Kambagani. நிறைந்த வளம், மிகுந்த சந்தோஷம், இவற்றையெல்லாம் இந்த புத்தாண்டு உங்களுக்கு கொண்டு வர இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Tradition wise, I would say we follow more or less similar to Yugadi, so I'm not going to repeat what Vidya said already. Food wise, the tradition is to make manga pachadi. Like again Vidya explained, it's a mixture of all 6 flavors. So instead of representing the same food here, we brought in mixed dal vada and chakkarai pongal, which is made of jaggery and moong dal. So this is another way of representing the agriculture with rich rice and lentils. And I mean, every festival is known by its food, so we generally have a banana spread. The reason for eating in banana leaf, like we all know, is because of the antibacterial property, and we have a full spread covering up to 16 dishes on that, and we have represented the sweet and savory part of it. Thank you, Anu. Wishing you all a very happy New Year. I think it's very great that Mrs. Ambassador has arranged this great gathering for all of us to meet and then greet personally. And as we represent Tamil Nadu, I really wanted to say all of us enjoying the celebrations. It's just to represent the seasonal changes. Our ancestors have very cleverly made each seasonal changes to be a very great celebration. It starts with Chaitra. That is, we all know the sun evolves or rises from east, but it is not so all the times. It rises at east and then it goes to the north, comes back to the east, and then go to the south and come back to east. So there are 4 seasons. It starts with the Chaitra, that's April, and then in July we have one called Adi Pirappu. That's the one which starts in Chaitra is equinox, which is spring equinox. And then we go to the top, which is north, that's summer solstice. And then when we come back to again the east, then it is autumn equinox. That is Diwali for us, which we celebrate in the month of October or November. And then comes to the winter, then we go down to the south, which is again Pongal, which is Sankranti. So that's again, so there are 4 different seasons. Just to represent each different seasons, we celebrate one festival. So that we kind of appreciate the seasonal changes and eat the respective different food. That's why our ancestors has forced all of us to celebrate something and then enjoy, eat nice food. So I really wish all of you to enjoy different food that every part of our country has prepared, and then be healthy and happy always. Happy New Year. शुभेच्छा और शुभकामना. So
So in Odisha we celebrate Odia New Year as Pana Sankranti, which is Mahabiswa Sankranti, which is a very auspicious occasion for all Odias. This is New Year celebration that we do on this day. This comes, it mostly falls on 14th of April every year according to Odia calendar. Yes, and this is like the first day of solar month of Mesa, which is the equivalent lunar month of Vaisakha. Yeah. So on this day, everybody in the morning they believe that they take bath in the rivers or any pilgrimage centers, and community contribute and participate in Mela. They participate in the charity, donating the clothes, donating the food. They believe that if we do some charities, that will bring happiness and good vibes. And after that, we enjoy a drink called Pona. Pona is a very special and traditional dish that we prepare on this day, and it almost in every house we prepare it. And during this Pana Sankranti, a very holy and a very special kind of custom is observed, that is Vasundhara Theki. That means everyone has a tulsi in our home, right? So on the basil tree we keep a pot, earthen pot filled with pona. We place it on the top of the basil tree, and then there is a hole in the bottom of the pot, and that allows the pona, that sweet water, to fall drop by drop on that tree. And like everyone here, many of you have described the same that we also follow. We celebrate at the end of the old year and the beginning of the new year with so much of enthusiasm, and we pray to God for the good life and happiness for everyone, and especially farmers. They pray for the good harvest and for good rain. Yeah, this is too much about our New Year celebration. And the sari that I am wearing is a traditional sari, which we call it as Sambalpuri sari. And this is also a very special sari, which is called as Pattachitra sari. Pattachitra sari. So, if I talk about the dish, this dish is pona. The main ingredient of the dish is bela, and we couldn't find it here in Norway. Bela, which is wooden apple we call, and then along with that chotua, which is sattu, and with grated coconut, milk, yogurt, some dry fruits, banana, mango, and the spices like cardamom and black pepper powder. Thank you so much. শুভ নববর্ষ। নমস্কার, শুভ নববর্ষ। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা, আমি কলকাতা থেকে। So I wish you all happy New Year. It's not the New Year, I think globally, but in India we celebrate this as the New Year. In our culture, in Bengali culture, we celebrate this festival with a lot of food, music, and color. So when I was a kid, I remember that I used to wait with my parents to go to the shops to get some sweets on this day. I didn't know much about this day, what it was, but then I learned that this is a very special day for all of us in India. So what we have done, we have prepared a very special dish that we eat on this day in our culture, in Bengali culture, that is called mishti doi. It's the yogurt
made with different flavors. So it's a little bit different in a taste. If I talk about Bengali, what we do on this day, so we do a lot of worshipping, pujas at home with our parents. So we worship Ganesha and Lakshmi for better health and wealth. And then we make a lot of foods. I think it would be minimum 10 food, type of foods for lunch on this day. And then in the evening, we go to the shops, the grocery shops, to get some sweets. Because in Bengal, in the shops, they open a new calendar on this day. So their financial calendar is ended, and then they start a new calendar. So that's why they give a sweet packet to all their customers, which is very funny, but it's a special thing we do in Bengal. And then we just eat food, and we do cultural programs with kids. And there is one more special thing that I still remember today, on this day, Poila Boishak, that is the Bengali term we use. We get a new clothes. And I remember when I was kid or small, I used to wait for this day to get a new dress for myself. And I knew that my parents will give. So I also try to do the same with my kids, that giving them a new clothes and let them realize that this is a very special day for all of us. And I wish you all Shubho Noboborsho again. Thank you so much, and maybe she can say a few words in Bengali. আমরাও কিন্তু সব সময় অপেক্ষায় থাকি, এবং এখানেও আমি খুব চেষ্টা করি বাচ্চাদের, আমার দুই ছেলে, আমি চেষ্টা করি বাঙালি নতুন কাপড় দেওয়ার জন্য। এবং আমরা আগের দিনই 31 তারিখেই আমরা সকালবেলা হলুদ এবং নিম পাতা দুইটা একসঙ্গে করে বেটে গায়ে লাগিয়ে তারপরে আমরা স্নান করি। স্নান করে তারপরে আমরা দই চিড়ে মুড়ি একসঙ্গে খাই। এবং আফটার ইভিনিং সারাদিন আমরা রান্না করি না, পরে সন্ধ্যার সময় আমরা সবজি, তার মানে লাবড়া, মিক্সড ভেজ লাবড়া, একদম বাঙালি স্টাইলের লাবড়া বানাই। তারপরে টক দিয়ে আম দিয়ে আমরা ডাল রান্না করি, আর আলু ভাজা রাত্রেবেলা এগুলো খাই আমরা, সারাদিন রান্না করি না। I can just translate this. I wanted all of you to hear a little bit Bengali. So what she said, that we take bath in turmeric and neem leaves on the day before, because it's a very sacred occasion for us. And then we eat. We make a special dal made of mango. I think one of you already said that mango is this is the starting season for mango. So we also use mango mixing with lentil. So we make a dal on a previous day. And then it's just the food, and we get a lot of fish and everything. So it's a very special day for all of us, I think. Thank you. Thank you. শুভ নববর্ষ সবাইকে।